So hello everyone, welcome to the another topic that is called as deciding the intensity of the exercise. Now how the intensity of the exercise has to be decided. आप लोगों ने कई बार सुना रहेगा somebody has told कि I did a high intensity workout और let's say I did a low intensity workout. आज workout की intensity काफ़ी ज़्यादा थी. Okay, so on what factor exercise intensity is dependent या exercise intensity is calculated. ये समझने से पहले फर्स्ट ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी. ओके, सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी. नाउ इंटेंसिटी क्लियरली मीन्स द अमाउंट और लेवल ऑफ एफर्ट्स, अमाउंट्स और एफर्ट्स दैट हैज अप्लाइड in an activity. अमाउंट और एफर्ट्स अप्लाइड इन द एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी करते समय ओके आप लोगों ने उस एक्टिविटी करते समय कितना एफर्ट्स लगाया, हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन. ओके, दैट इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी. नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. ओके, हाउ दिस एफर्ट्स or how this scenario can be explained with an example. So we'll just take a simple example. So let's say person A and person B, okay, both of them are doing squats, both of them are performing squats. Now let's say person A lifted 200 pounds या 200 lbs and person B also squatted for 200 lbs. Okay, person A has done 200 lbs and person B has also lifted 200 lbs in a squat. Now let us see how much repetitions they have performed. Now person A has did 5 repetition max and person B has did around 20 repetition max. Now what do we mean by 20 repetition max, or what do you mean by repetition max? Okay, it is the maximum repetition performed. Okay, repetition max, maximum amount of repetition means like 5 repetition max means it was not gone till 6th repetition, so it was a 5 repetition failure, it was 5 repetition max. Now understand, in this scenario both have lifted the same weight, दोनों ने भी सेम ही वेट लिफ्ट किया है स्क्वाट्स में, बट 200 lbs पूरा एफर्ट लगाने के बाद आफ्टर अप्लाइंग ऑल द एफर्ट, वॉट एवर एफर्ट ही हैज गॉट, पर्सन ही हैज गॉट, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द एफर्ट्स he just managed to lift 200 lbs for 5 repetition. पर्सन ए ने 200 lbs सिर्फ 5 रेपिटेशन के लिए उठाया. ओके, ही वॉज अनेबल टू लिफ्ट द 6th रेपिटेशन. पर्सन बी ने 200 lbs 20 रेपिटेशंस के लिए लिफ्ट किया, 20 रेपिटेशंस मैक्स. ए ने कितना किया था, 5 रेपिटेशन मैक्स लिफ्ट किया था फॉर स्क्वाट्स एंड बी डिड अराउंड 20 रेपिटेशन. सी नाउ द वेट इज सिमिलर. ओके, but understand, in person A and in person B the effort was different. efforts कैसे थे, अलग थे. after applying all out effort, सारे के सारे effort let's say for lifting the weight, person A has only managed to lift 5 repetition and person B has managed to lift 20 repetition. So according to this example, who has applied maximum effort? ओके, किसने सबसे ज्यादा एफर्ट उस स्क्वाट्स में वो 200 lbs को लिफ्ट करने के लिए यूज किया या लगाया, so that is person A. So according to this, intensity of person A was extremely higher as compared to intensity of person B. It was not a challenging weight for a person B, that's why he managed to lift 20 repetition. Understood? And it was extremely challenging weight to person A, that's why
द पर्सन ए मैनेज टू लिफ्ट ओनली 5 रेपिटेशन मैक्सेस. तो पूरा ताकत लगाने के बाद भी आफ्टर अप्लाइंग all the effort, person A has only managed to lift the 5 repetitions. So understand one thing, there is one conclusion over here. Intensity cannot be decided on the amount of the weight. Intensity कभी भी weight पे नहीं डिसाइड किया जाता है. इंटेंसिटी हमेशा repetitions पे डिसाइड किया जाता है. So the conclusion what we will write is, intensity is always decided on number of repetitions and not by the load. क्लियर है? इंटेंसिटी हमेशा कैसे डिसाइड किया जाता है? नंबर ऑफ रेपिटेशन. सो अंडरस्टैंड, whenever the workout intensity is extremely high, the number of repetition are always lesser, and the workout intensity is extremely low, the number of repetitions are always high. So understand, यहाँ पे पर्सन बी ने 200 LBS उसने 20 रेपिटेशन के लिए लिफ्ट किया, बिकॉज दैट वाज नॉट वेरी मच चैलेंजिंग टू हिम एज कंपेयर टू पर्सन ए. और पर्सन ए ने 200 LBS पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी सिर्फ कितना रेपिटेशन लिफ्ट किया है? 5 रेपिटेशन. सो एफर्ट 200 LBS लिफ्ट करने के लिए एफर्ट सबसे ज्यादा किसने अप्लाई किया? सो दैट इज पर्सन ए. So see, the weight is similar, but the number of repetitions are different. So we can clearly say the intensity of the person A was high as compared to person B. So that's why the conclusion becomes, intensity is always decided on the number of repetitions and not by the load. Now let us take a second example. So what does load says? Load आपको क्या decide करवाता है? जैसे कि नंबर ऑफ रेपिटेशन इज डिसाइड, इंटेंसिटी इज डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ रेपिटेशन. सो व्हाट डज द लोड सेज? सो लेट अस से अगेन द सिमिलर एग्जांपल, पर्सन इज लिफ्टिंग अराउंड 200 LBS. ये सिमिलर एग्जांपल ले लो. ए ने लिफ्ट किया है 200 LBS स्क्वाट के लिए. ओके, हाउ मच रेपिटेशन? 5 रेपिटेशन मैक्सेस. एंड पर्सन बी हैज नाउ लिफ्टेड 400 LBS. Okay, in squat, and he has also lifted 5 repetition max. So previously जैसे हम लोग ने स्टडी किया था, intensity is always decided on the number of repetition and not by the load. So you can see this, the number of repetitions are similar but the load are different. A is 200 LBS and B is 400 LBS. So B ने 400 LBS lift कितने रेपिटेशन के लिए? 5 रेपिटेशन के लिए. सो इंटेंसिटी वाज द सेम, इंटेंसिटी सेम था लेकिन लोड डिफरेंट था. सो व्हाट डज द लोड सेज? द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन बी इज हायर देन द पर्सन ए. सो द कंक्लूजन इज, वेट और लोड डिसाइड्स the strength of the person. So the conclusion is number of repetition decides the intensity, okay, and the amount of the load lifted decides the strength of the person. Okay, so whenever you are actually calculating or actually deciding the intensity of your workout, so always see how much number of repetition I can perform with a certain load. For example, let's say you and your friend are doing bench presses and you are lifting 20 kilos, and suppose the friend of yours is lifting 20 kilos, but you are able to perform 10 repetition, and with that 20 kilos your friend is only able to perform 3 or 4 repetitions. So obviously to lift that 20 kg load, your friend is applying more amount of effort, so the intensity will be higher. Okay, so understand, the conclusion will be,
intensity is always decided on the number of repetition. I hope you understood this lecture. Stay tuned for more lectures on exercise physiology. Thank you.